Right heading Venturimeter. And then wave they have started, you are saying? No? Yes, sir. Venturimeter. So whenever word meter comes, it is a device which will measure something. What is ammeter? Sir, it is used to measure the current in a circuit. Correct. Ammeter measures current in the circuit. Voltmeter, potential difference. Same way, venturimeter measures the velocity of the fluid entering. First, we'll write what is venturimeter. It is a device used to measure the velocity, or we can say speed, is used to measure the speed of flow of non-viscous incompressible fluid. So this device used to measure the speed of flow of non-viscous incompressible fluid. It works on the Bernoulli's principle. What is Bernoulli's principle? E plus half rho v square plus rho gh is constant. Please write this, then I am drawing diagram, then we'll see construction and its equation. Written? Yes. Okay. Now diagram I am showing. It consists of a tube which has got varying area of cross section, broader diameter at the end, and constriction. This is called constriction. Constriction at the center. So liquid when enters, we have to find what is velocity at this construction. A U-tube manometer is fixed at the entry and the constriction, filled with mercury. It is filled with mercury. Filled with mercury. Due to difference in height of liquid column, we can record the pressure difference at constriction and entry. So area A1 V1, here area A2 V2. It consists of a tube which is broader at the entry and exit with constriction in between. Let A1, V1, A2, V2 be the area and velocity at entry and constriction. H be the difference in height of liquid column measured by U-tube manometer. Or just see. Okay, just draw the diagram.
Yes, sir. Can. Diagram. Can I clear diagram now? Yes, sir. Yes. It consists of a tube with broad diameter, consists of tube with broad diameter and small constriction in middle as shown. In middle as shown. Let A1, comma B1 and A2, comma B2 be the velocity at be the area and velocity at entry and constriction respectively. Let H be the difference in height of liquid in U-tube manometer. U-tube manometer. Just write this much, then I'm doing calculation to find velocity V2. Done, sir. Okay. You all have completed? Yes, sir. 1 minute, huh? Now we'll do calculation part. By equation of continuity, A1 B1 is A2 V2. Therefore,
B1 equals to A2 V2 upon A1 by Bernoulli's principle. P1 minus P2 is half rho V2 square minus P1 square. Therefore, P1 minus P2 is half rho V2 square minus V1 square is A2 square V2 square upon A1 square. So P1 minus P2 is half V2 square into 1 minus A2 square upon A1 square. So we actually want, what is V2? So this is H, density of mercury into G is half V2 square if we want to find velocity at entry, then I should remove this V2. This will be A1 V1 upon A2. That is 1 minute. Velocity of the flow of liquid, half of rho into V2 square minus V1 square. So V2 is nothing but V1 square into A1 square upon A2 square minus V1 square. So H rho G, rho of mercury, is half rho into V1 square common, A1 square upon A2 square minus 1. Therefore, this will become H rho of mercury into G into 2 upon rho of fluid, that means liquid, into A1 square, A2 square minus 1 equals to V1 square. Okay, just copy, then single line. We'll take square root on both sides. We can find H, we know mercury ka density, we know G, we know 2, we know density of liquid, we know area, velocity can be found out by using above formula. Done, sir.
Done. One more line we have tried, therefore taking square root V1 का value. So V1 equals to square root of H rho G, rho of mercury, into 2 upon rho into A1 square upon A2 square minus 1. This is the last. So using formula, above formula, velocity can be determined. Using above formula, velocity of flow of fluid can be determined. Yes, I think done. Correct? Yes, sir. Done. Okay. So first principle was Torricelli's principle, which used Bernoulli's principle. Now Venturi meter. Third is blood flow and heart attack. How this is related to Bernoulli's principle. Blood flow and heart attack. See, when pressure increases, then only there will be heart attack. So if blood is flowing smoothly without any opposition or obstruction, there will be no heart attack. But if there is high pressure and blood wants to flow, then person will experience fatal heart attack and he may not survive. So by using Bernoulli's principle, we can explain the blood flow in arteries. If this is suppose artery, can you see anywhere constriction? Constriction means depth. Anywhere can you see sink or depth? It is smooth, na? Same area throughout. Now where is constriction, at A or at B or at C? B, sir. At B. तो जहां पे ऐसा डिप्रेशन आएगा उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन. So if this is artery, if due to fat accumulation, तो ये ऐसा constriction हो गया ना, ऐसा हो गया ना constriction. Fat आ गया इधर. Hello? So because artery may get constricted due to accumulation of fat on its inner wall. So in order to drive that blood through this constriction, there is great pressure here because opening should be open. Hello? Yes, sir. तो Yes, बहुत ज्यादा स्पीड में आता है यहाँ पे अपना blood, because when velocity is decreasing, area decreases, velocity will increase by equation of continuity. A1 Yes. V1, A and V are inversely proportional. तो constriction में एकदम speed से आएगा blood. The speed of flow of the blood is raised. उसके वजह से इधर प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा ना. मतलब बाहर प्रेशर बहुत ज्यादा, इधर प्रेशर बहुत कम. बराबर? Yes, Yes, sir. sir. So due to this the artery may collapse because of external pressure बहुत ज्यादा, इधर एकदम कम हो गया है. The heart exerts then pressure, further pressure to open this artery and forces the blood inside. As soon as blood rushes through this opening, internal pressure इधर का एकदम कम हो गया अभी, because velocity कम, जैसे blood चला गया ये pressure कम और इधर pressure ज्यादा. So internal pressure one again drops, फिर से collapse हो जाएगा आदमी. This may result in heart attack. समझा नहीं है कि आपको, वापस देखो. The artery through which blood flows may get constricted
ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फैट और प्लेक भी बोलते हैं उसको, PLAQ, प्लेक. So if the blood is flowing here, it has to pass through constriction. Constriction का area कम, मतलब velocity ज्यादा. So blood flows with larger speed, hence pressure decreases. As soon as pressure decrease हो गया, external pressure ज्यादा है, बराबर, तो ये खुल जाएगा. ये खुल गया तो ब्लड स्पीड में आगे चला गया. जैसे स्पीड में आगे गया, इसका प्रेशर अभी वेलोसिटी कम, तो फिर से इधर प्रेशर ज्यादा. तो एक बार प्रेशर ज्यादा, इधर कम, ये खुल गया तो ब्लड पास. जैसे ही ब्लड पास फिर से कम हो जाएगा, वापस वही कंडीशन, फिर से इधर प्रेशर हो गया कम. तो ड्यू टू दिस डिफरेंस इन हाई लेवल ऑफ प्रेशर इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल part of artery, the person may get heart attack. Due to Bernoulli's principle, we are able to explain. Everybody is followed? Yes, sir. Yes, sir. वापस समझाओ मुझे, कंस्ट्रक्शन पे वेलोसिटी क्या होने वाला है, कम क्या ज्यादा? कम होगा सर कंस्ट्रक्शन पे वेलोसिटी. ज्यादा होएगा ना, सॉरी सॉरी. ज्यादा हुआ सर. एरिया कम और वेलोसिटी ज्यादा हो गया. हाँ. तो बहुत स्पीड में आया इधर ब्लड, यस. Yes. जैसे स्पीड में आया ब्लड तो ये प्रेशर कम हो जाता है ना, बिकॉज वो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर में है. तो प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया, इसका मतलब ये हल्का हो जाएगा. तो इधर ज्यादा प्रेशर, तो एक हिसाब से फिर से खुल जाएगा ना, इधर ब्लड गया. जैसे ही ब्लड पास हुआ फिर से एक्यूमुलेशन हुआ, फिर से प्रेशर कम, तो कॉन्स्टेंटली प्रेशर कम ज्यादा होके द आर्टरी में रप्चर, पर्सन में डेवलप हार्ट अटैक. क्लियर? यस सर. Yes, sir. Okay, just write down the artery may get constricted, may get constricted due to accumulation of fat or plaque on its inner wall. In order to drive the blood through constriction, in order to drive the blood through constriction, a greater demand is placed on the activity of heart. Heart को ज़्यादा blood pass करना. To drive the blood through constriction, a greater demand is placed on the activity of heart. The speed of the blood in this region is raised, which lowers the pressure inside. And the artery may collapse due to external pressure. Due to external pressure, the heart exerts further pressure and forces the blood through.
मतलब देखो हार्ट पे भी प्रेशर आया, उसने भी ब्लड फेंका, और पहले से ही ब्लड का स्पीड ज्यादा है, तो दोनों मिलके वेलोसिटी ज्यादा, प्रेशर कम, अंदर बाहर का प्रेशर बहुत ज्यादा होके पर्सन विल experience that heart attack and forces the blood through. Just write this one, two more lines to explain properly. Completed? Yes, sir. हाँ, ये theoretical है, दो मार्क के पूछ सकते हैं एग्जाम में. Explain Bernoulli's principle in heart attack or flow of blood. So due to constriction, there is blood through constriction, a greater demand is placed in the heart, speed of the blood in this region is more, so pressure कम, बाहर का प्रेशर ज्यादा, इससे आर्टरी कोलैप्स हो सकता है, और वापस हार्ट भी ज्यादा ब्लड दे रहा है, बिकॉज इट हैज टू फोर्स द ब्लड थ्रू देम. So एक heart forces the blood through. As the blood rushes, through the opening, the internal pressure once again drops. Leading to a repeat collapse. This may result in heart attack. Okay, done till this? Yes, sir. हाँ, एक बार रीड कर लो क्या क्या लिखा है, थोड़ा पार्ट डिफिकल्ट है ये, मतलब थियोरेटिकल है. आपको कॉन्सेप्ट समझ गया तो वी कैन मूव अहेड. सो ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ब्लड विल रश, स्पीड विल इंक्रीज, प्रेशर विल डिक्रीज, ऊपर से प्रेशर ज्यादा, तो चांस है वो कोलैप्स हो जाएगा. अभी हार्ट को भी प्रेशर आया क्योंकि ब्लड आगे नहीं जा सकता है, तो अंदर से प्रेशर बढ़ा के वो पुश करेगा, तो जैसे ही पुश कर दिया तो फिर से वो कम हो गया कंस्ट्रिक्शन की वजह से, फिर से प्रेशर अचानक कम हो जाएगा, तो डबल टाइम आर्टरी को प्रेशर बाहर का ज्यादा लगेगा, इसलिए द पर्सन में गेट अटैक. क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट यूजेस देखते हैं थोड़ा और. First was Torricellis we used, then venturimeter, then person can have attack due to blood flow being restricted in constriction. Next is dynamic lift. So dynamic with motion. So due to motion, अच्छा चलेगा. क्या नाम से दिया है? कुछ नाम नहीं लिखा है. अच्छा ठीक है, वो कल फिर डाल देना ना संतोष. मैं बताता हूँ, अभी तो आज सब बंद हो गया रहेगा ना, अब रखो, मैं बताता हूँ कल क्या करना है. ठीक. हेलो, अंकिता नाम है ना स्टूडेंट का?
Yes, sir. एक डायनेमिक लिफ्ट का एक मतलब एग्जांपल देखो. कभी कभी क्रिकेट में लोग बोलते हैं स्विंगर डाला, सुना है आपने? स्विंग डाल दिया. Yes, sir. Yes, sir. स्विंग डालता है मतलब क्या करता है, बॉल को एकदम स्पीड से करता है और जैसे ही बाहर जाने लगता है बॉल, तो पूरे साइड से एयर ना एक्यूमुलेट हो जाता है नीचे साइड. Yes, sir. Yes, जैसे sir. उधर स्पीड ज्यादा तो प्रेशर कम हो जाएगा ना. Yes, sir. Yes. प्रेशर कम तो फटाक से लिफ्ट हो जाएगा ना, ऊपर हल्का हो जाएगा. Hmm. तो Yes, sir. Yes, sir. उसको डाल दिया. दैट इज नथिंग बट डायनेमिक लिफ्ट. अभी इसका बेस्ट एग्जांपल एरोप्लेन. एरोप्लेन पहले ही उड़ जाता है कि पहला रनवे पे भागता है? Sir, पहले रनवे पे भागे. भागता है पहले रनवे पे. रनवे पे भाग के वो क्या करता है, देखो अपना विंग को थोड़ा टेढ़ा करता है, देखा रहेगा अपने ध्यान से. तो Yes, sir. Yes. व्हेन इट चेंजेस द शेप ऑफ द विंग, तो विंग के नीचे ना बहुत सा एयर आ जाता है. जैसे ही बहुत एयर आ गया तो प्रेशर नीचे कम हो गया ना. Yes, sir. तो उसका डिजाइन ऐसा रहता है कि इधर ना बहुत सा ऐसा एयर आ जाएगा. एयर बहुत आ गया स्पीड से, तो इधर प्रेशर कम, इधर नीचे के साइड पे प्रेशर ज्यादा. ओके. Hmm. हाँ, ऊपर ज्यादा होता है, कम हो जाता है नीचे ज्यादा, ऐसा रेंज रहता है. तो ये हैवी प्रेशर से इसको उठा देगा ना ऊपर. Sir. तो इन aeroplane, while taking off, when the plane changes the shape of its wing and runs, then stream of air gets accumulated on the top surface, hence the pressure decreases at the top and increases at the bottom. Due to this, the aircraft gets lifted. This type of lift is called dynamic lift. Okay, dynamic lift. Yes, sir. Write down dynamic lift. Right. In aeroplanes, the wings are designed in such a way that Can you repeat? in aeroplane the wings are designed in such a way that when the plane runs on runway, then stream of air rushes on upper side, hence pressure decreases on upper side and increases on lower side. This helps to lift the plane. This helps to lift the plane. Completed? Yes, sir. Okay. Now only the last part of chapter left out, that is called surface tension, surface energy. For state board, this entire chapter, mechanical property of fluid, is in 12th standard. Vaibhav, hello Vaibhav. Yes, sir. This is for you in 12th standard. Again, I will revise when it comes. Don't worry. Okay, sir. Nija, from Monday you will sit in the morning batch, huh? Yes, sir. Okay.
what is meaning of cohesive force? Cohesive force meaning the force of attraction between similar molecules. Force of attraction between similar molecules is called as, because further part we have to study in terms of these four things which I am going to explain. Force of attraction between similar molecule is called as cohesive force. So water molecule when they attract, it is cohesive force. Kerosene when attract, cohesive force. But container molecule and water molecule when attract, then it is not cohesive force. Then it is called adhesive force. So the force of attraction between dissimilar molecules is called as adhesive force. The force of attraction between dissimilar molecules is called as adhesive force. So cohesive over adhesive over. Write this two definition. So what is the timing of the morning batch? Same 11:15 to 12:30. Then as when the college gets open, we'll see as per that. Okay, sir. Can I clear this now? Yes, This sir. two definition. So we got what is adhesive force, what is cohesive force. Third, molecular range. Molecular range. See, if this is one molecule A in this container, then it cannot attract all the molecule. There will be some limit up to which it can attract. So suppose it can attract molecule B and beyond this it cannot. तो उसका influence खाली A से B तक है ना हर side में. Hello? Yes, sir. See, there are Yes. few localite leaders. They are only known in small zone. So they mostly stand for corporation election. When his area increases, then he will stand for MLA. More popularity than MP. So if I'm popular, then only I can stand in the election. My popularity will depend upon some distance. If somebody is all over India famous, then he can be the contender of Prime Minister. Hello? Yes, sir. So a molecule can attract another molecule up to certain distance. That distance is called what? Molecular range. So I can say the distance up to which molecular influence exists, the distance up to which molecular influence exists is called as molecular range. Generally, it is up to 10 raised to minus 9 meter. Right definition, the distance up to which
molecular influence exists is called as molecular range. The distance up to which molecular influence exists is called as molecular range. Okay? Completed? Yes. एक छोटा सा डेफिनेशन और करते हैं. आगे का पूरा पार्ट विल बी बेस्ड ऑन दिस 4 डेफिनेशन. कोहेसिव फोर्स, adhesive force, molecular range, sphere of influence. Suppose this is molecule. It is attracting other molecule at distance of 10 centimeter. So 10 centimeter, wherever I go, I will feel its influence. Yes, sir. That means एक हिसाब से एक spherical zone में ये काम करता है ना. So if you draw a sphere with molecular center and molecular range as radius, then that sphere is called as what? Sphere of influence. And imaginary sphere, actually आप liquid में sphere बना नहीं सकते. So an imaginary sphere drawn with molecule as center and molecular range as radius is called as sphere of influence. Right. An imaginary sphere drawn with molecular center and molecular range as radius is called as sphere of influence. Sir, I should attend the same batch now. Huh? I should mean who is saying this? Sir, Anmol. For you there is no change. See, she has changed from one college to another college. Oh, See, 1 minute. Listen, just carefully. Don't take confusion. See, whether you are in CBSE batch, whether you are in ISC batch, ये दोनों का syllabus same है, 11th and 12th. State board का अलग है थोड़ा, but entrance में सब same हो जाता है end में. okay, sir. आपको जो एंट्रेंस के लिए कोर पढ़ाई कर रहे हैं उनको कुछ टेंशन लेने का जरूरत नहीं है. खाली फर्क क्या पड़ेगा, कुछ चैप्टर 11th में होगा, कुछ 12th में होगा, बट है तो पूरा सिलेबस आपको सेम. अभी ये जो चैप्टर मैं कर रहा हूं ना, इसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड. ये आप टेक्स्ट बुक ओपन करोगे तो 12th में सेकंड चैप्टर है. तो आप जो स्टेट बोर्ड वाले अपने पास अभी 2 जन है बराबर, तो उनको ये टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, पोर्शन सेम है. अभी इस बार देखो 11th में तो कुछ भी नहीं रहेगा, हार्डली कुछ आने वाला है, तो आपको एंट्रेंस का ही टेंशन लेना है ना, एंड 12th का बोर्ड का. Yes, sir. So don't take tension of anything about portion. You only think whatever we are doing we'll do perfectly. And entrance का टेंशन लेना है. चलो लिख दो पूरा इतना. कंप्लीट है? Yes, sir. Okay. See there I'm doing gravitation, which we have also done. Same chapter है उनको. उनका नेक्स्ट चैप्टर है साउंड. आपको भी है वेव, तो सेम ही है, खाली उनको थोड़ा कम है, पार्ट पूरा 12th में है.
आपका पूरा पार्ट 11th में ही ऐसे, खाली उनको ऑसिलेशन नहीं है अभी, वो 12th में है स्टेट बोर्ड को। थर्मल प्रॉपर्टीज उनको भी है, आपको भी है, तो सेम ही है, कुछ ज्यादा टेंशन लेने वाला जैसा बात नहीं। खाली इतनी लाइट वाला पूरा सेक्शन आपको 12th में है, उनको आधा 11th में, आधा 12th में। तो ये बैच में मैं लाइट जब स्टार्ट करूंगा वो 12th में करूंगा, 11th में नहीं करूंगा। लेकिन एक दो स्टूडेंट अपने पास एक्स्ट्रा है, उनको मैं सेपरेटली पढ़ा दूंगा। तो बैच मत चेंज करो, आगे जो इसमें भी आप Okay, कंफर्टेबल है sir. वही फॉलो करो। हाँ Yes, sir. चलो, क्योंकि एक साल तो ऑलमोस्ट चला गया ना, अभी 12th तो थोड़े दिन में चालू कर दूंगा मैं। आपके दिमाग में कंफ्यूजन मत रखो, कुछ रहेगा तो मुझे आप सेपरेटली पूछ लो, मैं बता दूंगा। दिस मच कंप्लीटेड? Yes, sir. ओके, एक छोटा सा डेरिवेशन, एक्सप्लेन with the help of molecular theory. Explain with the help of molecular theory why surface of liquid behaves like stretched elastic membrane. Membrane मतलब thin part. Have you seen balloon? Inflated balloon? Yes. Yes, वो sir. जब भी बस्ट हो जाता है तो आप फेंक देते हैं क्या उसको? कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, छोटा छोटा टुकड़ा लगा के मुंह में फुगा के छोटा सा ऐसा बनाते हैं ना बलून, चिकोटी बोलते हैं उसको। Yes, sir. फिर किसी किसी के सर पे ऐसा अपटते हैं ना फोड़ने के लिए। ऐसा किया है कभी प्रैक्टिस? Yes. Yes, sir. Yes, sir. मतलब हम लोग क्या करते हैं, टूट जाता है ना तो थोड़ा सा अपने मुंह में उसको और फुगाते हैं और गोल गोल घुमा के उसको ऐसा एक गोल बनाते हैं, फिर पतला बन जाता है ना वो एकदम। Yes, sir. फिर किसके सर पे ऐसा मारेंगे तो पुट करके आवाज आता है ऐसा। Yes, sir. Yes. तो दैट मींस इट इज थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन। फिर देखो डॉक्टर के पास आप जाओगे तो उनके पास स्टेथोस्कोप रहता है ना। Yes, sir. That stethoscope has one vibratory surface, पतला सा ऐसा डायफ्राम जैसा होता है, वो थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन है ना। Yes, sir. So thin elastic membranes mean very thin part from the top. Why it behaves like stretched elastic membrane? We have to explain. तो कोई तो उसको नीचे से खींचता रहेगा तभी स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन के जैसा बिहेव करेगा ना। हेलो Yes, sir. देखो, कोई कैसा जगह पे अगर देखा रहेगा आपने, आर्मी का ट्रेनिंग सेंटर है तो जाली जाली जैसा एक चीज रहता है, तो उधर आर्मी मैन ऊपर चढ़ता है फिर नीचे वो साइड से उतरता है, देखा है आपने? आर्मी ट्रेनिंग कैंप ऐसा कभी Yes, sir. ऐसा जाली जाली जैसा रहता है, देखा है आपने? वो लोग Yes, चलते हैं। sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ वो देखो, तो ज्यादा प्रेशर देंगे थोड़ा पीछे चला जाता है ना वो, Yes, sir. फिर किसी ने छोड़ दिया तो अपनी जगह पे वापस आता है ना। Yes, sir. दैट इज मीनिंग ऑफ स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन। मतलब पानी को अगर वैसा थोड़ा मारता हो तो नीचे डिप्रेस होता है, हाथ ऊपर कर जाओ फिर से प्लेन बन जाता है ना। नहीं समझा लगता है। एक रबर बैंड लिया मैंने, उसको खींचा, छोड़ दो तो वापस अपनी जगह पे आता है क्या? नहीं। Yes, sir. Understood. हाँ, तो सरफेस में ऐसा कौन है जो उसको खींचते रहता है, इसे एक्सप्लेन करने का। तो जस्ट राइट हेडिंग, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा कि वाई सरफेस के अंदर, खाली सरफेस पे अंदर फील नहीं होता है ऐसा। देखो कुछ लोग वाटर स्कीइंग करते हैं, देखा है आपने वाटर स्कीइंग? Yes. तो वो लोग क्या पानी के अंदर जाके स्कीइंग करते हैं क्या सरफेस के ऊपर करते हैं? सर वो लोग ऊपर जाके करते हैं। हाँ एकदम सरफेस के ऊपर वो स्कीइंग होता है ना। मतलब ऊपर कैसा होता है कि वो ऊपर नीचे ऐसा डिप्रेस्ड एलिवेशन होता है। तो हम लोग को ये प्रूव कर रहे हैं ऐसा क्या रहता है जो सरफेस को थोड़ा सा खींचा हुआ रखता है, मतलब वो आदमी को फील होता है कि स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन के जैसा है। कुछ कुछ देखो ऐसे एंट्स होते हैं, कीड़े छोटे छोटे, वो पानी के ऊपर चल पाते हैं, तो जब भी चलते हैं तो पानी थोड़ा नीचे आता है फिर ऊपर फिर नीचे ऐसे होता है। Yes, sir. यही अपने को समझाना है। तो आज के लिए इतनी, हेडिंग लिख के रखो। बैच चेंज खाली मैंने एक जन को बोला है, निजा को, बिकॉज वो आईएससी से स्टेट बोर्ड में आ गए। अभी वैभव का भी वही सिचुएशन है, ही इज इन स्टेट बोर्ड, लेकिन उनका कॉलेज का टाइमिंग डिफर हो रहा है तो ही कैन नॉट अरेंज दैट बैच।
लेकिन 90% वी आर डूइंग सेम थिंग. जिस दिन एकदम Yes, sir. सेपरेट वाला चीज रहेगा मैं बता दूंगा पहले. And focusing for now 11th तो almost गया. Entrance part and your 11th standard syllabus whatever it is. When exam approaches, we'll do the revision as per the board. Right now, don't take tension, take your comfort zone. But our evening batch is exclusive for ISC and CBSE people. So more I am taking the concept or syllabus of these people. But that doesn't mean that your syllabus is different than ISC and CBSE. जैसे इधर मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं सिखाया क्योंकि आपको नहीं है, वो 12th में पूरा आएगा. So ऐसा few chapters are different in state board. Whenever it is required, whenever it is needed, if there is some student by mistake in this batch, I will teach them. Okay. Yes, sir. So that's all for today. Vaibhav, wait for 2 minutes. Huh? Don't get confused. Tension नहीं आना चाहिए.